Hello class, in this chapter we learn a very important thing which actually do in real life. That is the calculation of premium. So class, in this chapter we learn how the life insurance premium is calculated. So class, first thing, what is premium? It is the amount given by, paid by policyholder or insured life. Fine. So class, gross premium is also known as your office premium because this is a premium which we charge. Fine. Class, there is two kinds of premium we are discussing. One is known as net premium, other is known as gross premium. What is the difference between the two? Class, net premium is without expenses and bonuses. Without expenses and bonuses. We are not considering the expense as well as bonuses. So this is just for the, for the regulations requirement we have to calculate. We'll learn in coming chapters why we require this. This is also office premium which I said you. This is a premium charged by insurance company. Premium charge by insurance company. So this include your bonuses and expenses. So class, हमने already bonuses last chapter में देखा है without profit contract and with profit contract के अंदर what is the bonuses and all. We have not studied what is expenses. Fine. So class, let's first understand the expenses part and then we'll come to how to calculate the gross premium part. Fine. Now class, there are first they have defined expenses in two ways. One expenses are known as direct expense. Fine. Other expense is known as overhead expense. Now what is direct expense and what is overhead expense? Plus direct expense वो होते हैं जो आपके पॉलिसी से डायरेक्टली एसोसिएटेड है.
expense. Fine. Other expense is known as overhead expense. Now what is direct expense and what is overhead expense? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके पॉलिसी से डायरेक्टली एसोसिएटेड है. लाइक एग्जांपल, कमीशन गिवन टू एजेंट्स, गिवन टू एजेंट्स, तो क्लास ये डायरेक्ट एक्सपेंस है उस पॉलिसी का, राइट. बट अगर मैं किसी एक्चुअरी की सैलरी की बात करूं, अब एक्चुअरी जो भी कंपनी में है वो सिर्फ एक पॉलिसी का तो प्रीमियम कैलकुलेट करता नहीं है, इट मेकिंग अ प्रीमियम फॉर ऑल द पॉलिसीज. तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी की बात नहीं हो रही, सो दैट इज व्हाई इट इज कमिंग अंडर व्हाट, ओवरहेड एक्सपेंस क्लास. फाइन. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल. नाउ क्लास लेट्स सी वन बाय वन. इट्स सेड हमें बताना है कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा ओवरहेड एक्सपेंस है. फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, दैट इज नॉट डायरेक्टली इफेक्टिंग वन पॉलिसी, दिस इज कमिंग अंडर व्हाट, overhead expense. Fine. A bonus of 10,000 payable to sales manager on completion of target of new business level class. So that is what, a particular policy की बात कर रहे हैं कि उसने एक sales target achieve किया उसके लिए. So that is why this is coming under what, direct expense. Fine. Head office canteen worker salary, again this is coming under what, overhead, because again this is not for one policy. Now class, new business administration department salary cost. अब class new business administration part, अब class ये इट्स अ वेरी ग्रे एरिया यू कैन से. कुछ कंपनीज इसको ओवरहेड में लेती हैं, कुछ कंपनी इसे योर डायरेक्ट एक्सपेंस में लेती हैं, और कुछ कंपनी दोनों में लेती हैं, आधा ओवरहेड में आधा डायरेक्ट में. क्लास इसका इंपैक्ट क्या है वो आप जब आप रिपोर्टिंग CB1 पेपर पढ़ेंगे वहां आपको इंपैक्ट पता चलेगा कि क्या इंपैक्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी पे ऑफ द कंपनी. बट राइट नाउ जस्ट हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं. अब क्यों ऐसा है क्लास, मान लो आपने जो न्यू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है. तो भाई ये ओवर टाइम कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी के कर रहा है, तो ये किस में आना चाहिए, डायरेक्ट में आना चाहिए. बट जो अगर रेगुलर पॉलिसीज हैं सबके लिए बात कर रहे हैं तो इट इज कमिंग अंडर व्हाट, ओवरहेड, राइट. कुछ लोग इसीलिए क्या करते हैं, जो उनकी रेगुलर सैलरी बात कर रहे हैं ये ओवर टाइम कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी के कर रहा है, तो ये किस में आना चाहिए, डायरेक्ट में आना चाहिए. बट जो अगर रेगुलर पॉलिसीज हैं सबके लिए बात कर रहे हैं तो इट इज कमिंग अंडर व्हाट, ओवरहेड, राइट. कुछ लोग इसीलिए क्या करते हैं, जो उनकी रेगुलर सैलरी है वो तो करते हैं ओवरहेड में, और जो ये ओवर टाइम वगैरह कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए उसको वो किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट में. बट क्लास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इसमें से पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम टेलिंग यू. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, बट हाँ आपको रियलिस्टिक टर्म्स में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी का. फाइन क्लास. Now class, let's see the expenses which we require to calculate the gross premium. So class, there are three kinds of expenses we are given in the question. First is I, which is known as initial expense. So class, this is one-time expense occurred at time zero. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, बट हाँ आपको रियलिस्टिक टर्म्स में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी का. फाइन क्लास. Now class, let's see the expenses which we require to calculate the gross premium. So class, there are three kinds of expenses we are given in the question. First is I, which is known as initial expense. So class, this is one-time expense occurred at time zero. ये क्लास जो इनिशियली एक पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए एक्सपेंसेस होंगे जिसके अंदर आपके एक्चुअल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट या थोड़ा बहुत जो भी आपको एक्सपेंसेस लेना है वो सारा इसमें क्या कर दिया उन्होंने, इंक्लूड कर दिया, राइट. ना क्लास ई इज लेवल एनुअल एक्सपेंस, इट्स लेवल एनुअल एक्सपेंस which occur every year apart from your initial. Now class, sometime this is also known as renewal
रिन्यूअल एक्सपेंस। अगर क्लास रिन्यूअल एक्सपेंस बोला है, दैट मीन्स दिस स्टार्ट फ्रॉम ईयर 2, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। तो प्लीज क्लास ई वाला पार्ट देख लेना, सम टाइम दे स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 1, बट 99% क्वेश्चन में आपको ये ईयर 2 से देगा। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो हमारा ई है वो लेवल एनुअल एक्सपेंस है या फिर रिन्यूअल एक्सपेंस है। फाइन। एंड क्लास एस स्टैंड फॉर टर्मिनल एक्सपेंस। क्लास वर्ड टर्मिनल कम फ्रॉम द वर्ड टर्मिनेट। ये जो वर्ड आया है वो टर्मिनेट से आया है। और टर्मिनेट मतलब क्या होता है? खत्म होना। जब पॉलिसी फिनिश होगी, फाइन, either on death or on maturity, this expense will occur, right? So let's see this, for whole life assurance। हम एक एक करके करते हैं प्रोडक्ट। अगर हमारी होल लाइफ एश्योरेंस है, फाइन, क्लास हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारा इनिशियल एक्सपेंस एक्स पर आय है। ई आई एम कंसिडरिंग रिन्यूअल एक्सपेंस क्लास स्टार्ट फ्रॉम x+1। तो क्लास इट इज देयर टिल द लाइफ इज नॉट डाई। तो या तो इन्फिनिटी तक, जब तक आपकी लाइफ डाई नहीं करेगी। तो लेट अस सपोज अ लाइफ डाई बिटवीन x प्लस के टू x+k+1। तो लास्ट एक्सपेंस कहां लगेगा? x+k तक। एंड क्लास ऑन टर्मिनेटिंग द पॉलिसी वी हैव एक्सपेंस f। क्लास व्हाट इज टर्मिनल? मैंने अभी बताया कि जो डेथ बेनिफिट आप दोगे, उस डेथ बेनिफिट को देने में भी तो कंपनी की कॉस्टिंग आएगी, कि आपको चेक करना पड़ेगा बंदा एक्चुअली जो आपने क्लेम किया वो एक्चुअल क्लेम है या नहीं है। क्योंकि देर आर सर्टन केसेस जहां पर आप क्लेम नहीं देते, लाइक सुसाइडल केस है, उसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी डेथ पर भी। तो आपको सब चीजें चेक करनी है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग अ टर्मिनल एक्सपेंस। तो क्लास इसकी फर्स्ट राइट प्रेजेंट वैल्यू। सो व्हाट इज माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस? सो प्लीज फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस। सो क्लास अगर हम इनिशियल एक्सपेंस की बात करें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आई, राइट, प्लस जो हमारा रिन्यूअल एक्सपेंस हमने बोला या लेवल एनुअल एक्सपेंस बोला, आई एम टेकिंग कंसिडरिंग दिस स्टार्ट फ्रॉम x+1 एंड इट गोज टिल x+k, राइट। नाउ दिस k इज रैंडम। सबसे पहले ये एन्युटी है, और एन्युटी भी क्या है? अरियर। तो ए के, हाउ मेनी पेमेंट्स आर देयर? kx। सो दिस इज माय व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। एंड प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस is f v raised to power kx plus 1, right class? Now find out EPV of expense. Take expectation on both side. So
expected present value of a constant is constant, right? The expected value of this is EAX, and expected value of this is F capital AX, right? Any problem? X, and expected value of this is F capital AX, right? Any problem? And how to find the value of AX class? We'll do A due X minus 1. Clear? Now class, similarly, please, if we have endowment assurance, please make a number line and try to find the present value and expected present value. Pause the video and try yourself and then check have you done correctly or not. Fine. So class, if we check for endowment, so class, it is at X we have I. From X plus 1 we have a renewal expense E. X plus 2 we have E. If life die within given fixed term, so we have F and E here. This is class my term, or we can have pure endowment benefit also. So E and F, for this is for pure endowment and this is for term endowment. Fine. So what is my EPV class? Sorry, first my present value. Now present value is what? I plus, now class, this is my what? Temporary annuity. So temporary annuity in arrear, EA what? Minimum of KX, and the last is N minus 1, so N minus 1. एंड सेम थिंग, जो चीज पहले अकर करेगी उसका एक्सपेंस लगेगा, तो एफ मिनिमम ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन प्लस. फाइन. सो प्लीज टेक केयर ऑन दिस. क्लियर? Minimum of n minus 1 temporary annuity in arrear, EA what? Minimum of KX, and the last is n minus 1, so n minus
-1 एंड सेम थिंग, जो चीज पहले अकर करेगी उसका एक्सपेंस लगेगा, तो एफ मिनिमम ऑफ फाइन. So what is my EPV class? Sorry, first my present value. Now present value is what? I plus, now class, this is my what? Temporary annuity. So temporary annuity in arrear, EA what? Minimum of KX, and the last is N minus 1, so N minus 1. And same thing, जो चीज पहले अकर करेगी उसका एक्सपेंस लगेगा, तो F minimum of KX plus 1 comma N plus. Fine. So please take care on this. Clear?
Now class, how to find the EPV of this? So class, EPV will be what? My EPV is I plus EAXN minus 1 plus FAXN. This is my temporary annuity in arrear, and this is my endowment only class. So that is why we get this. Now class, question come, how to find the value of this? Now class, if I add and subtract, we have EAXN minus 1. So if I add and subtract E in this, so class, there is a term at 0, so it become due. So it become EA due XN, and one extra term is coming, so the number of terms become N. I'm taking E common, minus 1. So class, remember, AXN minus 1 can be written as A due XN minus 1. So it's a very, very important formula. Fine. Plus another important thing in this part, which they sometime give, plus sometime they change the cost. Say, I say terminal cost for terminal expense for term assurance is F, and pure endowment assurance is F dash. Now I have changed the cost. ये F है और ये F की जगह F